we'll do a quick revision of what we were doing in the last class. Components of salary. यही चल रहा था सबकी क्लास में. Components of salary. We have written 4 components of salary. For the ease of understanding, we have divided components into 4 different components. 4 different components of salary. The first one was base pay. The second one was allowances. Third one was benefits and incentives. Fifth one was rewards and recognition. Okay. Now, this is the 4 main components of salary. किसी भी जगह सैलरी जब मिलती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या वो प्राइवेट सेक्टर हो, we broadly classify salary into 4 different categories. The components of salary into 4 different categories. It is for ease of understanding. And before this, you have been using the words like incentives, the words like allowances, the words like benefits interchangeably. यानी आप इंसेंटिव के बदले में अलाउंस यूज कर देते हैं और फिर चलिए टांग दिया. means the same thing, but it doesn't. These are different components of salary, and there is a particular reason why these components are included in the salary. जब पे कट होती है तो हर कंपोनेंट को टच नहीं किया जाता है, ठीक है. उसका भी एक रीजन है. जब कंपनीज अभी कोविड के टाइम पे कट हुई थी लगभग सारी कंपनीज का, तो सारे कंपोनेंट्स को टच नहीं किया जाता है. ओके. So to understand that, you need to understand कि what are these different components of salary. The first one is base pay. What is base pay? Base pay is the monetary part of salary. Monetary or financial part of salary. What does this mean? ये जो 4 component यहाँ mentioned है, all these 4 components, इसमें से कुछ components purely monetary हैं, कुछ components non-monetary हैं, और कुछ components both the financial is the same thing. Monetary and financial are same thing. Some components are monetary, purely monetary. Some components are purely non-monetary, and some components are both monetary and non-monetary. इसीलिए जब आप पेरोल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, you need to have a very clear concept of benefits, incentives, allowances, and all of these things. Okay. This is the monetary या financial part of salary, base pay. Base pay और basic pay सुना है ना आपने? Basic salary. तो basic salary क्या होती है कि ये एक fixed part होती है आपकी salary. This is a fixed part of your salary, and fixed part of the salary, and this is generally 40 to 50% of the CTC. Okay. This is generally 40 to 50% of CTC. What is CTC? Okay. Online students, tell me what is CTC? CTC क्या होता है? मैम कॉस्ट टू कंपनी. Very good. Cost to company का मतलब? What does this mean? मैम मेडिकल अलाउंस ये सब काट के जो रुपया कंपनी रखता है, टैक्स सब इंक्लूड करके. 1 minute, hold on.
ये आप जो बता रहे थे, क्या होता है सीटीसी? सीटीसी होता है। I think I've already told you this in the last class. पीएफ ऐड करके होता है। CTC is cost to company. इस cost to company का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी आपको 4 लाख का पैकेज देती है, ठीक है, या 5 लाख का पैकेज देती है, that CTC will be mentioned to you in the offer letter. उस ऑफर लेटर में आपका CTC मेंशन होगा कि ये CTC is 4 लाख per annum. अब फटाफट से ये कैलकुलेट कीजिए आप लोग और बताइए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको 4 लाख का पैकेज देती है, 4 लाख पर एनम, पर मंथ सैलरी कितनी हुई? कैलकुलेट इट फास्ट. What will be the per month salary? 33,333. कितना होगा? 36,000 अप्रोक्स। 33,000, 34,000 approx. 33,000 लमसम 33,000 आएगा. यहाँ क्या लिखा हुआ है कि the basic salary is generally, I am repeating it, it's not a written rule anywhere, it depends upon the paying capacity of the organization and the HR policy of the organization. ठीक है, लेकिन generally speaking this is 40 to 50% of CTC basic salary. तो अभी जो आपने कैलकुलेट किया कि कोई कंपनी आपको 4 लाख का पैकेज देती है CTC, पर मंथ की सैलरी आपने निकाली 33,000. अब ये मान लीजिए, जस्ट सपोज दैट a company XYZ gives you 40% of the CTC as the basic pay. ठीक है, तो मंथली बेसिक सैलरी निकाल के बताइए. करेक्ट, आप लोग बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मंथली अगर 40% बेसिक का बेसिक सैलरी इज 40% ऑफ CTC, तो आप फटाफट निकाल के बताइए कि 4 लाख का मंथली बेसिक सैलरी कितना बनेगा. कैलकुलेटेड फास्ट. कितना बनेगा? बोलो, did you get the question or not? See, I'll revise the question for you. क्या आपने लिख लिया है पूरा? ठीक है, आपने बेसिक सैलरी में लिखा है ना कि the basic salary is generally 40 to 50% of CTC. So tell me कि अगर किसी कंपनी की CTC जो आपको ऑफर हुई है, CTC is 4 lakh per annum, monthly salary is what? बताइए, अभी बताया था ना. What will be the monthly? 33,000. 33,000 कैसे आया ये? 4 divided by 12. 4 divided by 12 हो जाएगा. और मान लीजिए कि कोई कंपनी XYZ है जो कि जिसकी की बेसिक सैलरी जो वो देते हैं इज इक्वल टू 40% ऑफ CTC. तो मंथली इतना निकला ना, तो अब इसका निकालिए कि एक मंथ का बेसिक कितना होगा. 40% ऑफ 33,000. बताइए जल्दी से कितना होगा. 40 लाख है ना मैम.
40% है ये ऊपर वाला मैम CTC ऑफ CTC. CTC 40 लाख है ना? No, CTC is 4 lakh. 13,000 हो जाएगा मैम। 13,000 to 20 13,200. 200. ठीक है. So this rupees 13,200 will be the basic salary of that company which is giving you a CTC of 4 lakh per annum and basic salary as 40% of CTC. ठीक. अब यही चीज अगर आपको कंपनी 50% कोई कंपनी दे रही हो तो 50% of 33,000 बताइए. 16,000 16,500. 16,500 बेसिक सैलरी होगी. ठीक है. अब समझ में आया कि बेसिक कैसे कैलकुलेट होता है. और Yes, ma'am. बेसिक सैलरी हाँ फिर भी ये बेसिक सैलरी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आगे जो आप लोग अलाउंसेस पढ़ेंगे अभी. ठीक है. अभी हम आगे जो सेकंड कंपोनेंट अलाउंसेस पढ़ाएंगे वो सारा अलाउंसेस इसी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है. समझ में आई बात. इसी बेसिक सैलरी पे सारा अलाउंसेस कंप्लीट होता कैलकुलेट होता है. दिस इज द रीजन कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो चाहती हैं कि वो बेसिक सैलरी को थोड़ा कम ही रखें. ठीक है. बेसिक सैलरी को थोड़ा कम रखा जाए इसलिए कि अगर उसको डिडक्शंस करना होगा तो वो कुछ अलाउंस कट कर सकती है, बेनिफिट्स कट कर सकती है, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल इवन फॉर अ कंपनी to change this basic salary too often. इसको जनरली चेंज नहीं किया जाता है इसीलिए इसको फिक्स पार्ट ऑफ सैलरी बोला जाता है. ठीक है. बेसिक समझ में आ गया. Now next component, tell me what is, I think I have taught you this also. What is DA? DNS allowance. This is the cost of living. Okay. Online students, what is DA? बताइए. DA क्या होता है? I think I have discussed this in your class. भूल गया मैम, बहुत दिन हो गया ना. चलो ठीक. DA में वही एग्जाम प्री लोग. DA is dearness allowance. ये जो DA है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए कि ये कंपोनेंट ऑफ सैलरी कब बनी. This DA or DNS allowance was included as a component of salary after World War II. World War II के बाद वेज रिविजन के लिए डिमांड्स होने लगी वर्कर से. ठीक है. कि वेज बढ़ाया जाए. It's not easy to survive on that wage. तब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस DA को एज अ क्या डाला गया था. ये DA हमेशा से DA नहीं था, DNS अलाउंस. तब इसको डियर फूड अलाउंस के नाम से डाला गया था. When it was introduced in the salary, it was introduced as dear food allowance. ठीक है. Dear food allowance में इंट्रोड्यूस करने के बाद धीरे धीरे it took its due course and it changed to dearness allowance, यानी महंगाई भत्ता. ये जो DA है ये सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉइज को मिलता है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है. एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैव नो ऑब्लिगेशन टू गिव dearness allowance. इसीलिए प्राइवेट एम्प्लॉइज को DA नहीं मिलता है. सेंट्रल गवर्नमेंट में ना मैम, स्टेट में भी है. स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो उनकी अंडरटेकिंग होती है उनको भी मिलता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की कंपनी होनी चाहिए. ठीक है. डियरनेस अलाउंस को
क्यों दिया जाता है, सैलरी में डालने का क्या कारण है? आपने ये सुना होगा कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की सैलरी में 150% का भी हाइक हो जाता है, 80% का भी हाइक हो जाता है, 150 200 तक भी। अगर बहुत अच्छा स्विच है, आपने स्किल एनहांस किया है अपना, तो इट इज पॉसिबल कि आपको बिल्कुल दुगना सैलरी पे भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी इस तरह बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। उनका वही 3% फिक्स रहता है। अब 3% आप सोच लीजिए सैलरी का कितना कम होता है। इसके अलावा उनको पीआरपी दी जाती है, विच इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अंडरटेकिंग्स में दिया जाता है, पीएसयूज में। तो ये जो 3% है, क्या इससे बाहर की महंगाई जिस तरह बढ़ रही है उसको पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज कैसे काउंटरैक्ट करेंगे? मुश्किल होगी ना। इसीलिए बीए का प्रोविजन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के सैलरी में डाला गया, क्योंकि इस डीए को, देखिए, इस डीए को बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है। ये गवर्नमेंट रिवाइज करती है कि डीए को बढ़ाना है कि घटाना है, ठीक है, और इसको बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है महंगाई के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। बट यू टेल मी, कभी इन्फ्लेशन घटा है इकोनॉमी में? महंगाई घटती है? नहीं घटती है। इसीलिए प्रैक्टिकली डीए भी नहीं घटता है। प्रैक्टिकली दिस इज इम्पॉसिबल कि डीए घटा दिया जाए। अभी जुलाई में गवर्नमेंट सेक्टर का डीए रिवाइज हुआ है, जुलाई में, लास्ट मंथ। द रिवाइज्ड डीए हैज made a hike from 17% to 28%। डीए को 17% से बढ़ा करके 28% किया गया। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डीए कैसा बढ़ना चाहिए। डीए को साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है इन्फ्लेशन देख करके, पहला जनवरी में एंड द अदर जुलाई में, रिवाइज्ड इन जुलाई। ठीक है, जैसे लास्ट मंथ रिवाइज हुआ। कोविड के कारण डीए नहीं बढ़ा था, इसलिए लास्ट मंथ में पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज वर हैप्पी कि उनका डीए बढ़ गया। डीए किसको किसको मिलता है? पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग को, एंड टू द पेंशनर्स ऑफ द सेम। यानी आपके दादाजी वगैरह अगर कोई होंगे, तो वो अगर गवर्नमेंट की नौकरी में होंगे, तो डीए अगर बढ़ता है, सरकार अगर डीए बढ़ाती है, तो ये उनके पेंशन में भी रिफ्लेक्ट करता है। यस मैम, मिलता। उनका पेंशन भी बढ़ के आएगा, ठीक है, तो ये उनको मिलता है। तो डीए कोई पूछेगा अगर, तो यू शुड हैव अ क्लियर कांसेप्ट अबाउट डीए कि व्हाट इज डीए एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग इट एज अ कंपोनेंट ऑफ योर सैलरी। दैट डीए इज डियरनेस अलाउंस टू, I'll make you write that. This class, since it is a combined class, it will be a chaos, so I'll make you write it individual classes. Okay, you just understand it this class. So DA to counteract inflation as a cost of living, salary उस proportion में बढ़ती नहीं है, तो yes, it is to protect employees against inflation in the market. यही होता है डीए का काम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? अलाउंसेस। So if you want to write down, you can write down base pay and allowances. I'll start allowances in your individual classes. Write down your base pay. Hello? Please mute yourself. Write down base pay. It is the base income of an employee. मैम बेस का क्या बोले? एक सेकंड में। Okay. Right. Base pay. Salary components में पहला component base pay है ना? आप लिखिए base pay. It is the base income of an employee
which comprises of it is the base income of an employee which comprises of nearly 40 to 50% of the CTC. Near of CTC. मैम comprises of उसके बाद Nearly 40 to 50% of CTC. It is a fixed amount that is prior to any reductions or increases. Amount के बारे में. It is a fixed amount that is prior to any reductions or increases like bonus, comma, overtime, or allowances. क्या मतलब हुआ इसका कि बेस पे फिक्स्ड होता है, आपका कोई भी रिडक्शंस मतलब होने के पहले बेस पे मिलता है, ठीक है, जैसे पीएफ का डिडक्शन होता है या आपने कोई लोन लिया हो उसका डिडक्शन हो, तो उन सब के पहले जो अमाउंट मिलता है वो बेस पे होता है और वो फिक्स्ड होता है, ठीक है. Right now, it is determined based on the designation of the person it is determined based on the designation of the person through the process of job evaluation. Right, what did you write? It is determined based on the designation of the person and the industry in which they work. मैम job evaluation के बाद No, you write down. It is determined based on the designation of the employee, designation of the person या फिर employee जो भी लिखा है, employee and the industry in which they work. The other components like allowances are based on basic pay. Done writing? Next लिखो DNS allowance. Number 2. Next you write DNS allowance. DNS allowance is a certain percentage of basic salary
Dearness allowance is a certain percentage of basic salary and is meant to neutralize the impact of inflation. It is paid by the government to employees of मैम इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन उसके बाद it is paid by the government to employees of the public sector and pensioners of the same. Pensioners जिनको पेंशन मिलता है and pensioners of the same. It is revised twice a year in the months of January and July. Revised twice a year in the months of January and July.